So this is the name of chapter, feedback and oscillator circuits. तो और ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है. So what do we mean by feedback? So feedback means if we take some part of the output and apply at the input, this phenomena is called feedback. What is feedback? Taking some part or the whole signal, the whole output, all the output applied back at the input of the circuit. Now, then we further divide feedback into positive feedback and negative feedback. So, depending upon the relative polarity of the signal being fed back into a circuit, तो ये डिपेंड करता है जो सिग्नल आप एज ए फीडबैक सिग्नल आप अप्लाई करते हैं इनपुट पे, उसके पोलरिटी पे डिपेंड करता है कि उसका जो है रिलेटिव जो पोलरिटी है उसकी विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड सिग्नल जो है उसकी पोलरिटी क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है पॉजिटिव फीडबैक. अगर पोलरिटी जो है ना, जो फीडबैक सिग्नल की पोलरिटी अगर वो नेगेटिव है यानी आउट ऑफ फेज है विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड सिग्नल और सोर्स सिग्नल, फिर उसको हम कहते हैं कि हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है. सो पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक. What is feedback? Applying, Taking some part or the whole signal of applying output give to input. some part of the output signal or just output, and at the input of the circuit. Output signal or the whole signal. Applying some part of the output signal or the whole output signal. At the input of the circuit. Now, depending upon the relative polarity of the signal being fed back into a circuit, so we may have negative or positive feedback. So further divide into two classes: positive feedback and negative feedback. पॉजिटिव फीडबैक एप्लीकेशन किधर है? ऑसिलेटर्स. नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर. So what is mean by positive feedback? What is mean by negative feedback? So negative feedback means if the applied signal and the feedback signal are out of phase or they have opposite polarity, negative feedback. If the feedback signal and applied source signal have opposite polarity or they are
out of phase by 180 degree, then such feedback is called negative feedback. एप्लीकेशन किधर है? नेगेटिव फीडबैक is used in amplifier circuits. Amplifier circuits. Positive feedback is definition है if the feedback signal and the applied source signal have the same polarity or they are in phase, means having zero phase shift, then such feedback is called the positive feedback. आप रिपीट कर लें, यही चीज दोबारा लिख दें. If the feedback signal and the applied source signal have the same polarity or they are in phase, means having zero phase shift, then such feedback is called positive feedback. Positive feedback is used in oscillator circuit. लिख लिया? कंप्लीट? Yes, sir. हाँ, कंप्लीट हो गया? Yes, sir. Complete. ठीक ठीक. So positive feedback is used in oscillator circuit. So what are the benefits, what are the advantages that we get by using negative feedback phenomena? So simple block diagram of a feedback amplifier. तो एक चीज आप ध्यान में रखें कि नेगेटिव फीडबैक के से ओवरऑल जो वोल्टेज गेन है वो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन बाकी फीचर जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं. सो सिंपल ब्लॉक डायग्राम feedback amplifier. इनपुट सिग्नल जो कि हमारा अप्लाइड सिग्नल है, जिसको हम वी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस बीटा
amplifier, it's called mixer network. This is the amplifier. V naught output signal. This is Vi. This is the input voltage. So this input signal is the applied, this VSR, this is the applied signal voltage or applied signal source. Beta is the feedback, the block diagram, the box marked with beta, it is the feedback network. तो ये हमारे पास ये पूरा फीडबैक एम्पलीफायर है। This is the feedback amplifier. बीटा इज द फीडबैक फैक्टर है और ये डिटरमिन करता है कि कितना जो है ना आउटपुट का कितना पोर्शन इनपुट पे हम जो है ना अप्लाई करेंगे एज ए फीडबैक सिग्नल। ये जो वी आई है, ये देखें यहाँ से वी एस आ रहा है और इधर से आपके पास बीटा, देखें बीटा किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट। तो जो फीडबैक सिग्नल है वी एफ, ये हो जाएगा बीटा टाइम्स वी नॉट। इसका मतलब है कि बीटा जो फैक्टर है ये डिटरमिन करता है कि कितना पोर्शन आउटपुट का इनपुट पे एज ए फीडबैक सिग्नल अपेयर होगा। अगर बीटा को 1 कर दें तो पूरा के पूरा जो है वी नॉट इनपुट पे आ जाएगा। अगर बीटा लेट से 0.5 है तो हाफ ऑफ द आउटपुट विल अपेयर एज अ फीडबैक सिग्नल एट द इनपुट। और ऊपर देखें प्लस है, नीचे माइनस। क्योंकि हम एम्पलीफायर की बात करते हैं तो एम्पलीफायर में हम नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं। तो इधर ये देखें यहाँ पर आपको माइनस साइन नजर आता है, ऊपर प्लस। तो वी आई किसके बराबर हो जाएगा, वी आई बिकम वी एस माइनस वी एफ। वी आई इज इक्वल टू वी एस माइनस वी एफ and this A is the open loop gain. Open loop gain. It is also called basic amplifier gain. Basic amplifier gain, open loop gain. तो ये है सिंपल डायग्राम, सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। तो कौन से कंपोनेंट है आपके पास फीडबैक एम्पलीफायर में, मिक्सर, बेसिक एम्पलीफायर और फीडबैक नेटवर्क। दीज आर द 3
कंपोनेंट्स ऑफ अ फीडबैक एम्पलीफायर। और जब टर्म हम कहते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं फीडबैक एम्पलीफायर, इट मीन्स नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। अभी अगर ये जो आपको प्लस माइनस नजर आ रहा है, अगर ये वी एस प्लस वी एफ कर देना तो फिर यहां से ये पॉजिटिव फीडबैक फिनोमेना शुरू हो जाएगा। तो फिर यही सर्किट फिर एज ए ऑसिलेटर इस्तेमाल करेंगे। तो जो बुनियादी फर्क है ऑसिलेटर में और एम्पलीफायर में, ऑसिलेटर में कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करते। फीडबैक एम्पलीफायर में और जस्ट एम्पलीफायर सर्किट में हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं। ऑसिलेटर में कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करता, यानी ऑसिलेटर जो है अपनी डीसी की मदद से वो ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है, यानी एक लिहाज से उसने डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, बात समझ आ रही है? ऑसिलेटर में और एम्पलीफायर में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? एक तो फीडबैक फिनोमेना है ना, पॉजिटिव फीडबैक इन ऑसिलेटर सर्किट, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर सर्किट। लेकिन जो डिफरेंस है, ऑसिलेटर सर्किट्स के लिए हमें किसी इनपुट सिग्नल की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एम्पलीफायर के केस में हमें इनपुट सिग्नल अप्लाई करना होता है। ठीक है। जी सर। तो इफ द तो व्हाट इज बीटा? बीटा क्या है आपके पास? फीडबैक फैक्टर। वी आई किसके बराबर है? वी एस माइनस वी एफ। वी एफ क्या चीज है? व्हाट इज वी एफ? दिस इज द फीडबैक सिग्नल। सो वी एफ is equal to beta times V naught, or Vi is the input voltage applied to the amplifier circuit. And this amplifier, the triangle with A is the basic amplifier, and A is the open loop gain or basic amplifier gain. Vs is the applied signal source, which is the voltage source. So in case of negative feedback, the feedback signal and the applied signal voltage, or the applied signal voltage signal, or just applied signal, they are out of phase by 180 degree, or they have opposite polarity. So what are the advantages that we get with the application of the negative feedback? कौन सी चीज रिड्यूस हो जाती है? अभी मैंने बताया नेगेटिव फीडबैक, voltage gain, ओवरऑल वोल्टेज में। नेगेटिव फीडबैक reduces overall voltage gain. But there are other features that are improved. तो इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ। कुछ चीजें आपको आपने जो है ना आप लूज करते हैं, कुछ आप गेन करते हैं, और ये तरीकाकार है। कौन से पैरामीटर्स आपके पास इंप्रूव हो जाते हैं? सो
Negative feedback results in reduced overall voltage gain and a number of improvements are obtained and they are कौन सी इंप्रूवमेंट हमारे पास आ जाते हैं higher input impedance, better stabilized voltage gain, better stabilized improved frequency response, lower output impedance, reduced noise, and the sixth number is more linear operation. So these are the improvements that we get by applying negative feedback phenomena in the amplifier circuit with the reduction in overall voltage gain. अब ये चीज नोट कर लें आप, करंट को हम किस तरह सेंस करते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है करंट एंड वोल्टेज, करंट को किस तरह सेंस करते हैं और वोल्टेज को किस तरह सेंस करते हैं, पता है किस तरह करते हैं। करंट इज सेंस्ड इन सीरीज, voltage is sensed in shunting or in parallel. In parallel. Currents are subtracted in parallel. Voltages are subtracted, added in parallel. Voltages are subtracted in parallel.
currents are subtracted in parallel, voltages are subtracted in series, sorry. Currents are subtracted in parallel, voltages are subtracted in parallel. Sorry, voltages are subtracted in series. To sense the current, to sense the current, and an ammeter is वैसे अब connected. जरा मेक आप करें. An ammeter is connected in series and to sense the voltage, a voltmeter is connected in parallel. आप अगर करंट मेजर करना चाहते हैं तो एमीटर को सीरीज में लगाते हैं. अगर वोल्टेज किसी डिवाइस के क्रॉस मेजर करना चाहते हैं तो वोल्टमीटर को उसके क्रॉस पैरेलल में लगाते हैं. जैसे से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बैटरी है और ये रजिस्टर है. लेट्स से ये 10 वोल्ट बैटरी है और 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है. तो अगर अब मैं करंट मेजर करना चाहता हूँ तो एमीटर को मैं सीरीज में लगा देता हूँ और वोल्ट मीटर को मैं इसके पैरेलल में लगा देता हूँ. तो वोल्टेज को सेंस करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं और करंट को सेंस करने के लिए एमीटर को सीरीज में लगा देते हैं. ठीक है ना, ये चीज़ें तो आपको क्लियर है. Yes, sir. Currents are added or subtracted in parallel and voltages are added or subtracted in series. For example, आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी है और ये भी आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है. ये है और ये बी है. तो वी ए बी आपके पास हो जाएगा 10 + 5, ये बन जाएगा 15 वोल्ट. So voltages are added or subtracted in series. Similarly, 10 वोल्ट की बैटरी है और 5 वोल्ट की